mo doon eh? Swimming mo chima nya, swimming mo nya do pala cho has do pala. Hotel mun bo ataka nga masa? Mo ga nga cho. No mo luko pa. Himi yak nim so has ken ma sulo ko has tai ke. Luko e. क्या भाई नो हर्ष तो मिला हर्ष तो आप नहाएगा तो नहाओ लेकिन बाद में खुजली खुजली होगा तो आपका ही लॉस है नदी इतना गंदा है Chang do, like ma. ठीक है भाई चलो 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 जाएगा सारापा को दी ओयो Uran do do. हाँ आता निकाल गया sih kali si awas lah dake ah mau awas pa mula dake udah ah ke dokter kunci masuk ke gak So these are the 3 samples of water that I collected. The first bottle is from Kley River beyond Sikhe Lake, and the second one is from Ziro, and the third one from the entry to Hari, near Hari Gate. You can see the difference in colors. कौन माँ चाहेगा कि उसका बच्चा इस नदी में नहाए? अब वो बाई करे तो क्या करे? सी लेक में तैरना मना है, सिखे लेक में तैरना मना है. अब कोई तैरने के लिए थोड़ी ना हाके तरे जाए, काफ़ी दूर है वो. तो बस यही एक आखिरी उपाय बचता है. लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस नदी में कोई भी नहीं तैरता. लेकिन पहले ज़माना कुछ और था. Once upon a time, this part of the Kley River used to be full of children, full of boys and girls, learning to swim, playing on its clean waters. This place used to have a very transparent water. One could literally see the stones and pebbles and the sand beneath the river. Well, that was once upon a time. But today, this river is abandoned like it's a quarantine zone, as if it's not water that flows but poison. No one plays here, no one even dips their feet in it. If you ask the kids in Ziro this question, do you know swimming? Majority of the answers will be no. When we know that swimming is a very important survival skill and everybody should know it, but there's no place to swim in Ziro, and this was the only place, this river. But now, सर आप कभी क्ले नदी में नहाने गया था बचपन में? बचपन में तो हमेशा क्या बोले से हम लोग का बचपन टाइम में तो हम लोग तो जाता ही था. तो मेरा दोस्त लोग भी हम लोग जब स्कूल से निकलता था, निकलने के बाद होम क्ले में तो नहाता था. लेकिन इसमें बहुत सफा था. तो अभी क्यों नहीं जाता है? अभी क्यों बोलने से अभी हम लोग का नदी जो मतलब इतना गंदा हो गया है, तो इसमें जाने का मतलब वो नहीं है. तो नदी में ऐसा सफा था कि पहले हम लोग का टाइम में एक किस्म के जानवर भी मिलता था, लेकिन बचपन में तो हम लोग नहा ही था. अच्छा, स्विमिंग तो आप वहीं से सीखा होगा, क्ली नदी से? वही स्विमिंग सीखा है. आपका बेटा स्विमिंग सकता है? नहीं, उसको तो सिखाया नहीं. तो आप कहाँ सिखाएगा? अभी तो वो नदी में तो जा नहीं सकता है. नहीं, अभी तो कुछ. और तो स्विमिंग तो एक ज़िंदगी का एक बेसिक सर्वाइवल स्किल है. स्विमिंग सिखाने का पड़ेगा. हम सिखाने के लिए कोई जगह नहीं है. जैसे सिखे लेक में अलाउड नहीं है, सी लेक में अलाउड नहीं है, और बस एक ही नदी है और वो भी बहुत गंदा है. हाँ, वही गंदा है. नदी में देखने से अभी तक जबरा वगैरह पूरा अभी तक आ ही रहा है. तो देखता है कि मतलब जब नदी में हम लोग कभी कभी घूमने जाता है तो देखता है कि मतलब इसमें बोतल फ्लोटिंग करके आता है, ग्लास या प्लास्टिक वगैरह इस तरह का आता है. और सोर्सेस नहीं है कि अभी हम लोग का ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तो आया नहीं हम लोग को यहाँ. सर क्या आप क्ले नदी में बचपन में नहाने जाता था?
हमेशा डुबकी लगाता था। हमेशा डुबकी लगाता था। अभी जाएगा? इतना गंदा पानी कौन जाएगा? अभी इतना गंदा हो गया, मतलब आप जाना नहीं चाहते उसमें। अगर साफ होगा तो आप जाएगा? ऑब्वियसली। जो माइनिंग करते हैं, माइनिंग जी। और माइनिंग का इसका सोर्स को आप अच्छे से इसको नदी में नहीं जाने के लिए एक ऐसा प्रोविज़न रखते थे तो इतना भी नदी गंदा नहीं होगा। मेन एक्चुअली माइनिंग का वजह से हो रहा है गंदा, माइनिंग। तो माइनिंग का वजह से ये होता है कि नदी का पानी से हम लोग को खेती में पानी मिलता है, पर हम लोग खेती अभी डैमेज हो रहे हैं। तो इंक्लूडिंग हम लोग अपतनी का एक वो होता है कि पेडी प्लस फिशिंग, तो पेडी तो ख़राब ही और इंक्लूडिंग मछली भी मर रहा है माइनिंग की वजह से। सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो क्लीनिंग कैंपेन है हमारे नदी को लेके, क्ले रिवर को लेके, वो साल में कितने बार होना चाहिए? एटलीस्ट 3 बार। आपके हिसाब से अगर नदी का हाल इस तरह ही बिगड़ता रहा तो आगे जाके क्या असर पड़ सकता है? अभी आगे जाकर तो ऑब्वियसली जीरो में तो इतना बड़ा नदी नहीं है, एक ही नदी है और वही गंदा कर रहता है, तो हम लोग खेती बर्बाद हो जाएगा, इंक्लूडिंग आदमी को पानी पीने के लिए जरिया ख़त्म हो जाएगा, तो खेती पूरा फुल्ली डैमेज हो जाएगा। जीरो एक ऐसा टूरिज्म प्लेस है, ग्रीन जीरो, ब्यूटीफुल जीरो ही है, तो बीचों बीच होंग है, लेमचा है, हारी है, ताजंग है, इसका बीच में एक नदी बह रहा है, इसका आगे तरफ है विजा दूता बामची मराता गया। बस आप लोग सोचिए कि हम लोग दोनों बस्ती के बीच एक नदी बह रहा है, वो इतना गंदा क्यों है? I'm trying to trace the origin of Kley River, and so far I have come at this majestic Sikhe lake, and this is where my search for the beginning of Kley River has brought me. At this point it almost looks like the clay has disappeared, so somehow I think if I keep going this way, clay will originate somewhere out of those mountains. So that's where I'm going tomorrow, just to see where clay actually originates, and I want to go there because I actually want to see the quality of water there versus the quality of water that flows through the main town of Ziro and Hapoli. I want to compare a sample of water from that source versus the sample of water from the main town of Hapoli and Ziro, of the Kley River I mean. And some people who visit Ziro for the first time may even think that clay originates out of Sikhe Lake, but that's not true. Actually Sikhe Lake is built on the very source that brings water to clay. The same river, the same stream you can say. So clay has magically disappeared here. And it is almost 4:30 and it will be dark soon in Ziro around this time of the year. So I think I'll do the rest of the trekking and tracing tomorrow. Friends, right now I am behind Sikhe Lake. I just followed the route of Kley River to reach here. And what I found here is no surprise. Let me show you. Friends, look at the quality of water here. You can check it out. It's totally transparent like all clean water should be. Without much human influence, I can say that the water is as clean as it ever used to be. I'm going to take a sample of water from here on this bottle. Actually, you know what? I'll take the sample from the running water. Let's go. What the? And here's the sample of water. I slipped accidentally and I washed all my clothes back home. So it's a sad thing, you know. That's tricky. But anyway, I got what I wanted. The water of clay behind Sikhe Lake. This is what I came here for. I never thought the water of Kley River would be so clean just beyond Sikhe Lake. I mean, just look at this. Let's take a sip. Feels fresh like any clean water. This is the quality of water that Kley River needs to have. To comprehend that
The same water, the same clean water flows through the span of 5 to 6 kilometers from Ziro to Hapoli and gets so polluted that this looks nothing like the water of Kley River. I'm coming to this place for the first time and this looks so new to me. And I would like to request to all the people not to come here and litter. Humans, please stay away. Right from this place, the river water gets drastically altered. I'll show you. I'll be taking a sample of water from this place to compare later. So, let's dip it. And this is how the color looks. You see? If you ask me if I can drink this water, there's no chance. There's no chance. Just look at the beautiful place that is Ziro. And in the middle of the beautiful Apatani plateau is this little river getting so altered that it almost looks nothing like a river, more like the color of chai. This isn't how a river should look. Trust me. I'm yet to find out the reason for why the color of river gets so drastically changed like that. It's nothing like the water that was flowing beyond those mountains. Right now I'm in Hari village and I'm going to take a sample of water from this place. Just look at the color. Who would take a bath in this river? But anyway, let's take a sample of it. As you can see, there's nothing in the bottle. No mud or anything. It's very clean. This could have been a very nice swimming spot, but the color of water here would suggest otherwise. Again, so beautiful, full of hills, farms, and then this is an insult for entire town of Ziro. Our river should in no way look like this. This bridge can collapse at any moment. I think the concerned authorities must take a look at this. ये पुल जो है कभी भी टूट सकता है. I just pray that nobody is walking on it when it falls. Every day a minimum of 20 to 30 people cross this bridge, and there's another guy that's about to cross this bridge. Just in case if anything happens here, whose fault will it be? Nunggu pizza. Oh, ado. Coba kelega sih. Bilo yang kak make So these are the 3 samples of water that I collected. The first bottle is from Kley River beyond scenic, and the second one is from Old Ziro, and the third one from the entry to Hari, near Hari gate. You can see the difference in colors. I even drank a sip from this, but this one, nope, I cannot. And this one is even more dirty, from Hari. I don't want to get involved in the politics of, cleanliness campaign and stuff like that. Not at all. I'm not a journalist. I'm just an observer. All I'm asking is, we have to turn the water of clay from this to this to this. This is how the water of clay should look. And this is our responsibility to make it happen. Guys, before I go, just know that Kley is the only river that flows through the heart of Ziro. But the condition and the quality of water, it seriously worries me. Of course, Clean Kley campaign happens once a year and generates some awareness among the people. But you know what? That's not enough. In one way or the other, we have to stop all activities that is polluting our river. We must stop thinking that clay is the outlet for all the drains of Ziro. Please tell me in the comments how we can improve the condition and quality of the water in Kley. I hope the relevant authorities will read your comment. If you're concerned about environment like I do, and if you like my type of content, please do me a favor and subscribe. मुनि भैया, आपका घर में 1 हफ्ता से पानी अगर नहीं आ रहा है, तो ये पानी से आप खाना बनाएगा या ये पानी से खाना बनाएगा? इससे बनाएगा। आप जानना चाहते हैं ये कहाँ का पानी है? हाँ, नदी का पानी। ये नदी का पानी ऊपर तरफ से, नीचे तरफ से, और ये भाई ना
ये होंग नदी का ही पानी है ऊपर तरफ से। तो ये जो 5 किलोमीटर में जो नदी जो बह के जा रहा है ना, उसमें पानी का रंग ऐसा हो जाता है, ऐसा कितना गंदा हो जाता है। और ऊपर जहाँ कुछ चेर चार नहीं है वहाँ का पानी इतना साफ़ है। ये देखिए, ये पानी कहाँ कहाँ का होगा? ये पानी जीरो का होगा, ये पानी असम का ही होगा। दोनों क्ले नदी का पानी है। ये जो ये जो साफ वाला ना, ये जो साफ वाला जो है ना, ये ऊपर से लिया सिखे लेक के ऊपर से। और ये वाला जो है, ये है ओल्ड जीरो से लेकर हपोली तक जो ये नीचे बह रहा है, तो वहाँ का पानी ऐसा हो जाता है। ये कलर ऊपर का ऐसा है, इसको तो हम पिया भी है। तो आप देखिए, ये है क्ले का पानी सिखे लेक के पीछे से, ये मिनरल वाटर। अब ज़्यादा फ़र्क नहीं है, आप देख सकते हैं, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस नेचुरल वाटर तो इतना तो उसमें तो कलर होता है। अभी ये देखिए ये है क्ले का पानी सिविलाइजेशन में आने के बाद। Kacung masa ngun tanengan dah kalian kedi Hum kali kili kacau waspa. Capol bi sore, kalar bi sore.